flow statement. Along with financial statements like balance sheet and profit and loss, we also have to prepare a cash flow statement. Now, cash flow, it's so self-explanatory that it's a flow of cash. Normally, we judge business by its profit. But ये जितना भी profit है, it does not necessarily mean कि it's a cash profit, isn't it? At the same time, I want to understand ये cash which I received and the cash which I spent, how it is moving in the business. One is I want to know कि ये जो profit है, ये basically cash profit है, नहीं, because we follow which system? Mercantile system. Say for example, I sold goods on credit. तो सेल्स में चला जाएगा, सेल्स में गया तो ग्रॉस प्रॉफिट में उसका प्रॉफिट आ जाएगा. At the same time, I also have debtors. So this profit does not necessarily mean it's a cash profit. Secondly, only from balance sheet or profit and loss, I cannot understand the flow of cash, how the cash flows from different activities to different activities. इसका utilization during the year कैसे हुआ, कितना cash generate किया, कितना cash spend किया. उसके लिए we are going to now prepare this cash flow statement. Now, ये जो cash flow statement है, उसका basic जो है, it starts from cash book. Which side is this? Receipt, and this side is payment. So similarly over here, we have in cash flow, net cash flow, which is net cash inflow, and second is net cash outflow. What is this? No. ध्यान देना. Cash book में we have opening balance, we have all the receipts, we have all the payments, and we have the closing balance. Oh, stop नहीं भाई. We have the closing cash balance or bank balance if we are making columnar. Now यही जो cash book है, उसका format हम change कर रहे हैं. और उससे बनाने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो नेट कैश फ्लो क्या है? नेट कैश इनफ्लो, यानी व्हेन योर इनफ्लो इज मोर देन योर आउटफ्लो, एंड नेट कैश आउटफ्लो व्हेन योर आउटफ्लो इज मोर देन कैश इनफ्लो. अंडरस्टूड दिस? ऐसा हो सकता है ना बिजनेस में कि प्रॉफिट है पर बैंक बैलेंस नहीं है, बैंक ओवरड्राफ्ट है. ऐसा पॉसिबल है कि नहीं? एब्सोल्युटली पॉसिबल. तो यहाँ पे हम ये स्टडी करने वाले हैं कि ये कैश अलग अलग एक्टिविटी से कैसे जनरेट होता है या कहाँ पे ये कैश स्पेंड होता है. नाउ यू रिमेम्बर द फॉर्मेट ऑफ करंट असेट्स, CIT, CSO was what? Cash and cash equivalent. Now, when we talk of cash flow, over here, we talk of flow of cash and cash equivalent. Now, cash means what? Cash on hand and bank balance. And cash equivalent यानी क्या? Short term, highly liquid investments. Short term, highly liquid investment. Okay, so for example, मेरे पास कैश है या बैंक बैलेंस है, तो वो करंट अकाउंट में, तो उसके सामने मुझे कोई भी इंटरेस्ट मिलने वाला नहीं है. तो मैं क्या करता हूँ, शॉर्ट टाइम के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर देता हूँ कि जैसे ही पैसा चाहिए मैं उसको सेल करके वो पैसा लेके यूज कर सकता हूँ. तो here in cash equivalent we include extremely short term
highly liquid investments. Okay, now can we go for those investment where fluctuation is very high? No, because हमें ये पैसा कभी भी चाहिए तो हम ऐसी जगह इन्वेस्ट करेंगे where it is safe. In mutual fund we have debt fund. Debt fund is just like a fund where your money is secure. तो स्टॉक मार्केट के फ्लक्चुएशन से उस रेट पे फ्लक्चुएट होता नहीं. You get very nominal return every year. You get 6%, 8%, 10%. As compared to equity funds, जहाँ पे you may get 30% also, you may get negative 10% also. So when I say cash and cash equivalent, cash on hand, bank balance, and short-term highly liquid investment, generally they are government securities. Now, the third one. Now, ध्यान दो please. Now, all these activities in business where cash is generated or cash is spent is divided into three parts. First is operating. Second is investing. And third is financing. Now, in cash book, ऐसा कोई भी bifurcation है नहीं. हमने कैश कैसे कैसे आता है हमारे पास? How do we receive cash? Owner brings money in the business, say in the form of capital, cash sales, interest, income. These are the receipts. Payment side, drawings, cash purchases, then various expenses. Also, here you have collection from debtors, and here you have payment to creditors. So various items are there, but we are not classifying into different category. Over here in cash flow statement, we classify these activities into three categories. One is operating, investing, and financing. Now, what is operating? Operating यानी cash generated from operations. Operations यानी क्या? The main activity of business. Say for example, if it's a trading firm, then what is the main activity? Buying and selling of goods. Very good. Then, if it's a bank, तो उसका बैंक का मेन एक्टिविटी क्या है? Accepting deposits and lending money. Very good. Okay. If it is an insurance company, क्या है इसका मेन काम इंश्योरेंस कंपनी का? प्रीमियम कलेक्ट करना, सो रिसीप ऑफ प्रीमियम, और उसके सामने पेमेंट्स ऑफ क्यों भरते हैं हम प्रीमियम? कुछ मिसहैप हुआ, कुछ हो गया, कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, डैमेज हो गया, तो उसके सामने क्या मिलेगा हमें? इंश्योरेंस क्लेम, सो पेमेंट ऑफ क्लेम्स. You understood this? Coaching class में what is our main activity? Main activity is to provide tutorial services. Is this clear? Okay. So for various type of businesses, there are different types of operating activities. If it's a trading firm, buying and selling of goods. If it's a bank, accepting deposit, lending money. If it's an insurance company, receive premium and payment of claims. Understood this? Okay. ये लिख लो, फिर मैं जाता हूँ. I need board again.
important from theory point of view is what is this net cash flow or cash flow, net cash inflow, net cash outflow, what is cash and cash equivalent, what are the different types of business and what is operation as per them. ठीक है, तो trading है तो buying, selling, bank, accepting deposit, lending money, insurance company तो receipt of premium and payment of processing, payment of claims. ये कैश बुक का ही वेरिएशन है, इतना माइंड में याद रखना. ओके, वेरी सिमिलर टू कैश बुक बट डिफरेंट वे ऑफ डूइंग इट. ओके, नाउ बिफोर वी प्रोसीड, ध्यान दो, यहाँ से मैं तुम्हें समझाता हूँ कैश बुक से कि व्हाट आर द डिफरेंट एक्टिविटीज. अब मुझे ये बताओ, कैश सेल्स कौन से टाइप का एक्टिविटी है? गुड्स बेचा कौन से टाइप का एक्टिविटी है? Obviously operating. Understood? Because what is operations? Buying and selling of goods. ध्यान देना please. Okay? फिर cash purchase कौन से टाइप का एक्टिविटी है? What? Operating. Very good. Okay. Then normal expenses of business to run the business. Again operating. Again operating. Okay. Collection from debtors. Collection from debtors. Collection from debtors. कौन है debtors? जिसको हमने credit पे goods बेचा है. Again debtors, so it is operating. Payment to creditors. Operating. Very good. Now, what is capital and drawings? Capital is owner bringing money in the business. So ये business को funds मिल रहा है. So what type of activity is this for business? Business को finance मिला. So it is financing activity. Similarly, drawings, financing activity. Now, purchase of asset. Very good. Investing. समझ में आया? Sale of asset. सेल ऑफ असेट. हाँ, ये असेट बेचना, एसी बेच दिया मैंने OLX पे डाल, तो ये क्या है? ये मेरा बिजनेस है. एसी खरीदना, फिर लगाना, फिर यूज करना, फिर OLX पे बेचना. नो, ये क्या है? असेट जो पैसा इन्वेस्ट किया था. ओके, जैसे यहाँ इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ये भी मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही है. यहाँ पे फाइनेंसिंग इनफ्लो, फाइनेंसिंग आउटफ्लो. गॉट इट? ओके. देन इफ आई हैव रेंटल इनकम, रेंटल इनकम, રેન્ટલ ભાડા પર ઘર આપ્યું, પ્રોપર્ટી આપી અને ભાડું કમાયો. Investing. Very good. Very good. Investing. Understood this? Now you got a fair idea about ये सब क्या क्या है. Okay, और भी आएंगे when we do, because here we are done for sole proprietor. Here we are doing for limited companies. Is this clear? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव्ड कौन से टाइप का एक्टिविटी है? ये सिक्योरिटी प्रीमियम किसके ऊपर हमें मिलता है? इक्विटी शेयर्स के ऊपर. यानी शेयर्स इश्यू किया, पैसा मिला, किसको शेयर्स देते हैं हम? शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी. कैन आई से it increases the capital of the business. Premium is also part of that. So it is a financing activity. Long-term loan borrowed or debentures issued. Debentures issued. Financing activity. Debentures redeemed. Debentures redeemed. जो पैसा लिया था, अब वो पैसा वापस कर दिया, तो ये मेरा क्या बिजनेस है? डिबेंचर. नो, तो ये कौन सा एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग. अंडरस्टूड दिस? सबको समझ में आ रहा है? ओके. नाउ क्वेश्चन 3 का 3, पेज नंबर 285, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन,
First, ध्यान दो please. First, wages paid. What type of activity is wages paid? Operating or non-operating? Operating. लिखो. It is operating activity. Operating activity. Second, purchase of building. बताओ कौन सा टाइप का एक्टिविटी है ये? नॉन ऑपरेटिंग तो पता है मुझे, कौन से टाइप का है पूछा मैंने. It is investing. Okay, so you write non-operating activity. In question it is not asked कि बाकी कौन से टाइप का है, but still we will write investing. Third, sale of furniture. Operating or non-operating? Non-operating. Okay. What type? Very good. Non-operating activity. Investing. Fourth, payment to creditors. Creditors को पे किया. किसके लिए पे किया आपने? Goods खरीदा उसके लिए, तो goods. Operating activity. Fifth, dividend paid. Operating or non-operating? Non-operating. Sixth, rent pay. रेंट पे किया, वो ऑपरेटिंग है या नॉन ऑपरेटिंग? कैसे? मैंने अगर ये क्लास भाड़े पे लिया है और मैं भाड़ा भर रहा हूं, तो ये कोचिंग के लिए ही है ना. रेंट रिसीव्ड कैन बी माय नॉन ऑपरेटिंग इनकम. क्लास भाड़े पे लिया, वो क्या मेरा बिजनेस है? पर क्लास भाड़े पे लिया और भाड़ा पे किया. इफ आई एम गिविंग रेंट, व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटी इट इज? ऑपरेटिंग एक्टिविटी. If you are doing business and you have taken a place on rent, you have to pay rent to run the business. So that's why it's an operating expense. So operating activity. Understood this? Okay. Then 7. Pay office expense. कौन सा एक्टिविटी? ऑफिस एक्सपेंस. ऑपरेटिंग एक्टिविटी. 8. Pay sales and distribution expense. कौन सा एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी. 9. Carriage inward. कौन सा एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी. Carriage outward. कौन सा एक्टिविटी? Again operating activity. 11th, royalty paid. कौन सा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी. ऑपरेटिंग एक्टिविटी. ट्रेडिंग अकाउंट में आता है ना रॉयल्टी. ट्रेडिंग अकाउंट किया हमने, ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी आता है वो सब हमारा ऑपरेटिंग है. अंडरस्टूड दिस? रॉयल्टी क्यों पे करते हैं हम?
रॉयल्टी क्यों पे करते हैं हम? अगर हमने कोई टेक्नोलॉजी यूज किया है किसी का, तो हमें उसको रॉयल्टी पे करना पड़ता है, तो इट्स अवर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। देन 12 इनकम टैक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका बहुत सिग्निफिकेंस है, इसके फॉर्मेट में अलग से इसको ट्रीट करना पड़ता है। इनकम टैक्स पेड, व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हमने अभी तो लिखा था ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अब ध्यान दो, अब हम जा रहे हैं एक्चुअल सम्स बिगिन करने वाले हैं, तो उसके पहले ये कंसेप्ट समझ लो, फिर मैं जाता हूँ पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसके बाद। now over here in profit and loss account we start with opening stock, then we have purchases, then we have purchase expenses, and then we have two other operating expenses. Other operating expenses, then we have expenses like depreciation, then we have expenses like leasehold building written off, expenses like patent written off. Are these expenses cash expense? They are non-cash expenses. So we have various non-cash operating expenses, which goes to profit and loss. Then we have financial expenses and appropriations. Is this appropriation? What is appropriation? क्या आता है appropriation के अंदर? Reserves and surplus में जो ट्रांसफर करते हैं, और ये जो appropriations है, are they something which we pay in cash or they are just adjustment entries? They are just adjustment entries to retain profit in the business. Then we have financial expenses, जैसे interest on loan, interest on debentures. Understood this? Now, इसके अलावा non-cash operating expense के अंदर depreciation आता है, वैसे provisions भी आते हैं ना, various types of provisions. Okay. Then on the credit side, we have by operating incomes, and we have non-operating income. Like what? Rent, dividend received, interest received. Understood this? Now, इसके बाद हमें मिलता है हमारा फाइनली क्रेडिट माइनस डेबिट, we get our net profit. But this profit, is it a cash profit? This profit is not a cash profit. Understood this? Now, when we are preparing a cash flow statement, we have to find out कि हमने cash profit कितना कमाया ये साल. Okay, now to find cash profit, first step is ये जो net profit है, इसमें अगर मुझे cash operating profit find करना है from this profit and loss account, तो ये non cash operating expense और फाइनेंशियल एक्सपेंस को हम कर देंगे ऐड, और ये जो इनकम था जिसकी वजह से ये प्रॉफिट इंक्रीज हुआ था, इसको हम कर देंगे माइनस. अंडरस्टूड दिस? बाकी एज इट इज ही रहेगा. तो इससे हमें क्या मिलेगा? ये करने के बाद हमें मिलेगा कैश प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस. अंडरस्टूड दिस? Okay, now this is not the cash flow from operation. उसके लिए एक और स्टेप है जो बैलेंस शीट में जाके करना है, मैं बाद में समझाऊंगा when we do the next to next sum. अभी के लिए ये समझ में आया तुम्हें? Are you able to visualize कि एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में
जितना भी नॉन ऑपरेटिंग है, जितना भी नॉन कैश है, उन सबको हम निकाल देंगे. If it is expense we add, if it is income we subtract or deduct. Understood this concept? Okay, ये बना लो फटाफट, बुक में भी दिया है. Question 15, page number 285. Heading: cash flow from operating activities. Question number 15, page number 285. From the following transactions, calculate cash flow from operating activities. Profit before tax is already given. So this profit is already given, which is 99,000. Now, income tax provision. क्या करेंगे इसको, add या subtract? इनकम टैक्स का जो प्रोविजन किया उसकी वजह से प्रॉफिट डिक्रीज. नाउ वी हैव टू ऐड इट, सो वहां पे प्लस कर दो. प्रपोज्ड डिविडेंड इज आल्सो प्रोविजन फॉर डिविडेंड. प्लस और माइनस, प्लस. डेप्रिसिएशन, नॉन कैश, ऑल ऑफ देम. देन डिविडेंड रिसीव्ड. व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटी इज डिविडेंड रिसीव्ड? It is investing. हमने कहीं इन्वेस्ट किया तो हमें डिविडेंड मिला. So it is investing activity. Okay. Then interest received. Interest received plus या minus? Minus. Again, it is a type of investing activity. Debentures में इन्वेस्ट किया तो इंटरेस्ट मिला. समझ में आ रहा है ना सबको? That's why I'm giving examples so that you understand this. Then interest paid. Interest pay किया plus, that's fine, पर कौन सा टाइप का एक्टिविटी है ये? इंटरेस्ट किसके ऊपर पे करना पड़ता है? लोन के ऊपर. तो लोन हमें पैसा दिलाता है, तो it is a financing activity. Understood this? Okay. Then goodwill written off. Goodwill written off plus, and profit on sale of asset minus. Very good. Now ये सब करके हमें मिलेगा कैश प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस क्या है मैं सिखाऊंगा तुम्हें नेक्स्ट कंसेप्ट में. यहाँ पे we just have to find the cash flow from operating activities. Now let's start. Profit before taxes 99,000. पहले ऐड कर लेते. ऐड क्या करना है हमें इसमें? नॉन कैश. एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजंस, एंड अप्रोप्रिएशंस. Because it's a short sum, we are writing it together. We start with, पहले हम क्या कर लेंगे? ऐड कर देंगे. तो we start with first one, which is income tax provision. 29,000. Proposed dividend 39,000. Depreciation. Depreciation is operating, but it is not cash, isn't it? That's why we added back. Non-cash, 22,000. Then
Interest paid 28,000. Goodwill written off amount is 15,000. Total. What's the total? 1,33,000. What's the total? 2,32,000. Less non-operating income. Now, non-operating income माइनस करना है. So माइनस क्या है? डिविडेंड रिसीव्ड. What's the amount? 21,000. Okay, 21,000. Then interest received 20,000. And then profit on sale of asset 12,000. Total 53,000. What's the final amount? Net amount 1,79,000. Profit cash. Profit cash flow before working capital changes.